Hello students, today we will be studying about discriminant analysis, which is part of data analytics. So discriminant analysis is a multivariate statistical technique used for classifying a set of observations into predefined groups. The objective is to understand group differences and to predict the likelihood that a particular entity will belong to a particular class or group based on independent variables. So we have many observations, and those observations we want to put into different groups. So the application is, suppose we have many players, and those players we want to group into maybe a basketballer or a volleyballer. तो ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा उनके एंथ्रोपोमेट्रिक वेरिएबल्स पे. हाई परफॉर्मेंस होगा है या लो परफॉर्मेंस है, इस ये डिपेंड करेगा बेसिस ऑफ स्किल पे. सो बेसिस ऑफ स्किल के कुछ वेरिएबल्स होंगे, उनको देखते हुए that particular player will be ranked high or low performer. Similarly, junior category में जाएगा या senior category में जाएगा, that will depend upon the age parameters. So इस तरह से, for example, a riding mower manufacturer would like to find a way of classifying families into a city into those that are likely to purchase a riding mower and those who are not likely to buy one. So what he did a pilot random sample of 12 owners and 12 non-owners in the city, and then उसका डेटा आप देखिए, ये डेटा है हमारे पास, 24 ऑब्जर्वेशंस हैं. तो उसमें इनकम स्टडी कर ली, प्लॉट साइज, और ऑनर है तो 1 डाला हुआ है और नॉन ऑनर है तो 2 डाला हुआ है. फिर इसको प्लॉट कर दिया, ये देखिए प्लॉट साइज और ऑनर के बेसिस पे प्लॉट कर दिया. तो ये इस तरह का जो सिंबल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑनर्स को, और ये स्क्वायर जो ब्रैकेट है डायमंड शेप ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्क्वायर शेप जो है वो नॉन ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो अब आप देखिए, जब प्लॉट कर रहे हैं तो एक इमेजिनरी सी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, बिकॉज दिस साइड मेनली ऑनर्स आर देयर एंड दिस साइड मेनली नॉन ऑनर्स आर देयर. सो अगर प्लॉट साइज और इनकम हमें पता हो, एंड इफ that will lie this side, then chances are they will not purchase, and if it lies that side, then the chances are they will purchase. So this way we are discriminating, classifying the customers into owner or non-owner. Purpose kya hai? The main purpose is to classify a subject into one of the two groups on the basis of some independent traits. तो यहाँ पे independent trait क्या है? Plot size and income. तो उसको हम परचेस करेगा, दिस इज वन ग्रुप, नहीं परचेस करेगा, दिस इज सेकेंड ग्रुप. सो ए सेकेंड पर्पस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप मेंबरशिप एंड द वेरिएबल्स यूज्ड टू प्रेडिक्ट द ग्रुप मेंबरशिप. रिलेशनशिप भी हम स्टडी करना चाहते हैं कि भाई क्या रिलेशनशिप है, वेदर इट विल परचेज और when the situations when the independent variable is dichotomous or multichotomous. Dichotomous means जैसे हमने ये परचेस करेगा तो 1, नहीं परचेस कर रहा है 2. सो दैट वे जो डिपेंडेंट वेरिएबल, आउटकम वेरिएबल जो है वो डाइकोटोमस है या मल्टीकोटोमस भी हो सकता है, इसमें 1 2 3 4 देयर कैन बी मेनी ग्रुप्स. इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मैट्रिक, इंटरवल या रेशियो है. मैट्रिक हो सकता है जैसे हाइट है, वेट है, इनकम है, इस तरह से मैट्रिक वेरिएबल्स. एजम्पशंस क्या रखते हैं इसमें? हम एजम्पशन रखते हैं सैंपल साइज है, इट शुड बी एटलीस्ट 5 टाइम्स द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. तो जैसे ये मोवर वाले केस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स 2 हैं, इनकम और प्लॉट साइज, तो हमारे कम से कम 5 into 2 10 ऑब्जर्वेशंस होनी चाहिए. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ईच ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बायस नहीं होना चाहिए. Then homogeneity of variance and covariance on which all variables have linear and homoscedastic relationships. Outliers should not be present in the data. And data analytics is highly sensitive to inclusion of outliers. Non-multicollinearity, there should be not be any correlation among the independent variables. Income or plot size में हम मान के चल रहे हैं, there is no correlation. Mutually exclusive, the group should be mutually exclusive with every subject or case belonging to only one group. ऐसा नहीं कि फर्स्ट ग्रुप परचेज भी कर रहा है और नहीं भी कर रहा है, इस तरह का एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए. They should be mutually exclusive.
Classification, each of the allocations of the dependent categories in initial classification are correctly classified. Proper classification होना चाहिए. अब हम discriminant analysis में करते क्या हैं? In discriminant analysis, the dependent variable is a categorical variable. पता है हमें categories हैं 1, 2, 3, 4. Whereas independent variables are metric. कुछ values हैं independent variables. After developing the discriminant model for a given set of new observations, the discriminant function Z is computed. Discriminant function हम linear discriminant, non-linear discriminant function हम Z बना compute करते हैं. The subject and object are assigned to first group if the value of Z is less than 0 and second group if the value is Z is more than 0. So then in independent variables, so let's see the steps of analysis. In step 1, the independent variable which have the discriminating power are being chosen. Independent variables choose किए जाते हैं. A discriminant function model is developed by using the coefficients of independent variables. Correlation coefficient use करते हैं या कोई और coefficient use करके एक discriminant function develop करते हैं Z. Next, significance of discriminant function is tested by computing Wilks lambda. Wilks lambda test है जिसकी help से significant जो discriminant function हमने define किया है उसको हम test करते हैं. Independent variables which possess importance in discriminant functions are found. So सारे independent variables लेने के बजाय सिर्फ उन्हीं independent variables को लें जिनकी importance है. Non-important नहीं लेंगे. Lastly, classification of subjects to their respective groups. And lastly, subjects जो हैं उनको उनके respective groups में classify कर देते. So terminology, if you see, variables in the analysis, maybe variables are independent or dependent variables. Then discriminant function. A discriminant function is a latent variable which is constructed as a linear combination of independent variables such as Z is equal to C plus B1, X1, X1, X2, X3, Xn are independent variables. B1, B2, B3, Bn are coefficients and C is the constant. So this is the discriminant function. Now this discriminant function is used to classify the subject oblique cases into one of the two groups on the basis of observed value of the predictor variable. So putting the values of x1, x2 and all, will get some value of Z. So if it is less than 0, it will go to one category. If it is more than 0, it will go to some other category. Classification matrix or assignment, it tells us to what percentage of the existing data points are correctly classified by the model developed. So we go for Wilkins test. Just now we had studied Wilks lambda test, and that way we can classify. There is another method, stepwise method of discriminant analysis. Discriminant function can be developed either by entering all independent variables together or stepwise depending upon whether the study is confirmatory or expert. So that is how discriminant function is developed. That is one of the methods of discriminant function. We have studied many methods of developing linear equations. So similarly, here also discriminant function is type of linear equation only. So how to develop that discriminant function? So there are methods. So here we are using stepwise method. One by one, the variables are entered. Power of discriminatory variable. After developing the model in the discriminant analysis based on the selected independent, it is important to know the relative importance of the variables so selected. So it's not necessary that all independent variables will keep in the final discriminant function. Those which are not very important, they may be deleted. So this is that step where we are trying to find out which is important, which is not important. So we stop here. Thank you.